Hello, good afternoon, everyone. Can you see and hear me? All right, so hi, good afternoon. Welcome, Alpesh, Truranga, Nancy, Palak, Christy. How is everyone? Thank you, Alpesh, for the cue. How is everyone doing? And this question is from my side as well as Alpesh's side. Good afternoon, everyone, and welcome to the Hindu editorial of the 4th of April, presented to you by Vaishnavi and Unacademy. Hello, Nishita. Hi, good afternoon. Good afternoon. All right, today we have a plethora of words. Okay, हमारे पास बहुत सारे words हैं आज, तो हम जल्दी से शुरू करते हैं because if we don't start early, it will take a long time because there are a lot of words. Okay, so let's get started. Are you ready? Shivani, just a day. Just one day. Hi, Harsh. Good afternoon. Hello, Harshita. All right. Okay, so let's get started. आज बहुत सारे sentences बनाने पड़ेंगे. There are words that have been repeated as well. Today's vocabulary में बहुत सारे ऐसे words हैं जो repeat भी हुए हैं. So mm, I hope you are able to identify. Let's see how many of you are able to identify कैसे हैं words. कौन से words पहले आए हुए थे? Hi, Billa. All right, let's get started. So first things first, my Telegram channel is called Unacademy underscore Vaishnavi underscore CLAT. And if you scan the QR code, you will be able to get into my channel and you will know all the sessions happening. Like for instance, right now, let's just, I have given the information about today's session and I hope that everyone who hasn't joined the channel yet, you do join the channel, okay? The link for the Telegram channel has been added in the blue strip that is attached. So please make sure that you are able to at least join through this. अगर आपको join करना है तो blue strip में जो link दिया हुआ है उस that will take you straight to my channel. All right. So let's get started with the words. Hello, Anshika. Hi. I am taking plus classes in an academy. In fact, there's one batch that has already started from the 30th of March, and there's another batch that is the Warriors that is going to start soon. So I do take classes in plus batches as well. All right, and on that note, let's get started. What is happening? Sorry about that. Let's get started. The first word is alacrity. Do you remember alacrity? हमने किया है alacrity, right? We have done the word alacrity before, and again the editorial जिसमें हमने किया था alacrity, उसमें भी ये पहला ही word था. So alacrity it is, which means brisk and cheerful readiness, willingness या eagerness इसका synonym हो सकता है. किसी चीज को करने के लिए उत्सुकता, okay, is alacrity. Okay, so the alacrity with which
he was ready to take up CLAT preparation was fabulous or was tremendous or was remarkable. ठीक है? So the eagerness with which, तो आप इसको replace कर सकते हैं with eagerness, right? So you can replace it with eagerness. अगर आपको alacrity जैसे ही दिखेगा, you can replace it with eagerness. It means the same thing, okay? Similar thing, okay? Scourge is a person or thing that causes great trouble or suffering. So someone जो परेशान करता है, जो बहुत ज्यादा पीड़ा प्रदान करता है in people is scourge. Okay, scourge is a person or a thing. It can be a person, कोई इंसान हो सकता है, कोई चीज हो सकता है जिससे बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, जिससे बहुत ज्यादा सफरिंग हो रही है. That is called a scourge. Uh, why should you join this channel? CLATS 2024, you should join this channel if you want to know which session am I taking and when am I taking. Also, we have a quiz that I do in this session. So here and there, you get to know idiomatic expressions, yeah, vocabulary. So things are happening in the channel. So it is not, I'm not forcing you to join the channel. लेकिन आपको लगता है कि आपको जानना है कि मेरी क्लासेस कब हो रही हैं, कहाँ हो रही हैं, you can join the channel. Okay. He accepted my invitation with an alacrity that surprised me. Very nice, Ayushi. I think this is Ayushi. I think you made the same sentence last time, or I have seen this because the sentence is perfectly fine. No problem with it. Absolutely correct sentence. Accept the challenges of life with alacrity. Very nice, Palak. Good job. That's the way to look at life. I accepted the money from her with alacrity. Triranga, you keep accepting money from women. I mean, all your sentences revolve around it. So, good sentence. Very nice. Accepting money is always with alacrity. Who doesn't want to accept money, right? Very nice. I have an alacrity to build my vocabulary. I have an alacrity to build my vocabulary. Very nice. Very nice, Nancy. Good job. I'm okay. You did not make it. It's okay, Ayushi. I thought that this was the sentence that I saw earlier, but nice sentence. I'm I am alacrity नहीं हो सकता है, right? I have alacrity to do your editorial classes. Okay, very nice, Christy. Very nice. Good job. Of course, Ritu, when you are taking CLAT subscription, it's not that we are only preparing you for CLAT. अभी जैसे MHCET के classes, MHCET preparation focus classes चल रहे हैं, फिर AILET preparation focus, DULLB focus preparation classes चलेंगे, and then you will have AILET preparation classes also going on. But the majority of the focus will be on CLAT. It's not that it is the only exam that I'm focusing on. ठीक है? I have an alacrity towards NLU. Okay, or I have alacrity to go to NLU. Very nice. Chandan, good job. I have alacrity to crack CLAT. I don't have alacrity for attending mocks. Very nice. Um, at 11:45, I become alacrious, okay, to attend your classes, and I'm sure that your classes will help me come out from scourge. Very nice, Nishita. Good job. Depression can scourge you up. Okay, this depression can cause a lot of scourge. Okay, that is also fine. Harshita, I have alacrity to explore new food dishes from different cuisines. Okay, I have an alacrity to explore different cuisines. You can keep it short and crisp, end it right over there. Servers are helpful and usually perform with alacrity. Very nice, very nice. Good job. I have alacrity to go to school. Okay, to school. Yuvansh, I have alacrity to my studies. Very nice, Simran. Good job. It requires a team effort to defeat the scourge of terrorism. Very nice, Ayushi. Good job.
Drugs are a scourge that is devastating our society. So सावधान रहे, सतर्क रहे. Very nice, Triranga. Good job. Good job. Chandan, I'm very alacrious to meet my new online classmates and also you, ma'am. Thank you, Chandan. His alacrity to wear a new tuxedo is absurd. Very nice, Kanish. Good job. Uh, that's my alacrity that it's my alacrity that always helps me to improve myself. Very nice, Nishita. Sometimes technical issues become a scourge. Very nice. So we have seen alacrity and scourge हो गया हमारा, जिसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा परेशानी लाती है, या कॉज होती है कोई परेशानी की, जड़ होती है कोई परेशानी की, दैट इज अ स्करेज. नेक्स्ट इज विजिलेंटीज. विजिलेंटीज का हमने बहुत ज्यादा, इफ यू वॉच सुपर हीरोज एंड यूर फैन ऑफ सुपर हीरोज, तो आपको पता होगा विजिलेंटीज और सुपर हीरोज में क्या डिफरेंस होता है. Vigilantes, सारे सुपर हीरोज आर नॉट कॉल्ड vigilantes because vigilante is specifically a member of a self-appointed group of citizens who undertake the law enforcement in their community without legal authority, typically because the legal agencies are thought to be inadequate. तो basically vigilantes कैसे पैदा होते हैं, कैसे बनते हैं? अगर एक group, it can be a group of people, okay. Vigilantes is the plural form, vigilante is the singular form. तो एक पर्सन हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं जिन्होंने लॉ को अपने हाथों में ले लिया है. बेसिकली दे आर परफॉर्मिंग एंड ऑल द दे हैव टेकन लीगल अथॉरिटी इन देयर हैंड, और लॉ को अपने हाथ में ले लिया है. और उसके बाद क्या करते हैं ये, कोई भी लीगल एजेंसीज जो भी वहां पर जो कानून है उसको इनएडिक्वेट माना जाता है, इसीलिए विजिलेंटीज पैदा होते हैं. इसी मकसद से पैदा होते हैं कि हम अब लॉ अपने खुद से चलाएंगे, बिकॉज द लॉ मेकर्स आर नॉट इन्फोर्सिंग लॉ adequately. ठीक है, तो विजिलेंटीज उसका होता है. तो ग्रीन एरो इज अ विजिलेंटी, देन बैटमैन इज अ विजिलेंटी. बेसिकली गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करते हैं, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करते हैं, खुद से पनिशमेंट करते हैं. दे आर द जज, ज्यूरी एंड द एग्जीक्यूशन हेड, राइट. सो विजिलेंटीज इसका मतलब ये होता है. हाय नेहा, आई एम एब्सोल्युटली फैबुलस. आई होप यू आर डूइंग वेल टू. Alacrity is the solution of every scourge. Very nice. Good job, Nishita. I am okay. ये तो कर लिया. His alacrity to wear, ये भी कर लिया. That's my alacrity, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया. Okay, Batman is worthy vigilante of Gotham. Very nice, Kanish. I like the sentence. Okay, so vigilantes are people जो अपने हाथ में कानून ले लेते हैं, right? Okay, moving on to allegedly. Allegedly बहुत important word है, high frequency word है. Remember this also we have done before. ठीक है, allegedly का क्या मतलब होता है? ये एक adverb है. तो used to convey that something is claimed to be the case or have taken place although there is no proof. अभी अगर मैं आपको कुछ बताती हूँ कोई एक इंसिडेंट्स के बारे में कि ऐसा सुनने में आया है या ऐसा केस एक आया है, where this person has done this या this, so all this is allegedly, okay, because there is no proof. मैं आपको proof दे नहीं रही हूँ, तो बिना proof के अगर मैं कोई claim करती हूँ, कोई आरोप लगाती हूँ, तो that is allegedly, okay. adverb ly से end हो रहा है तो it has to be adverb. राइट विंग्ड किसको कहते हैं? राइट विंग्ड, देर आर टू विंग्स, राइट विंग्ड एंड लेफ्ट विंग. ओके, राइट विंग जब भी आप देखोगे, सो अंडरस्टैंड दैट लेफ्ट विंग आर पीपल हु आर who who promote changes. Okay, advocate करते हैं क्या, क्या advocate करते हैं? न्यू टेक्नोलॉजी advocate करते हैं, नया everything that is basically on the basis of equal rights and freedom. राइट विंग कौन से होते हैं? जो advocate करते हैं measures to promote free enterprise and private ownership, टिपिकली फेवरिंग सोशली ट्रेडिशनल आइडियाज. वो क्या फेवर करते हैं? ट्रेडिशनल आइडियाज को फेवर करते हैं. राइट विंग ट्रेडिशनल आइडियाज, बिकॉज दे आर कॉल्ड कंजर्वेटिव्स. ओके, सो रिमेंबर दैट कंजर्वेटिव्स आर राइट विंग.
ठीक है। राइट विंग पॉलिटिक्स और लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स होता है ना। तो राइट विंग पॉलिटिक्स इज बेसिकली ऐसे ऐसे पॉलिटिकल मीन्स या मेजर्स जिसमें कंजर्वेटिव वेज को प्रमोट किया जाता है, ठीक है, ट्रेडिशनल आइडियाज को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। सो दैट इज राइट विंग एंड इट इज एन एडजेक्टिव। सो राइट विंग गवर्नमेंट, राइट विंग पार्टी, राइट विंग society, it can be anything. All right, so let's look at the sentences. अब हमने right wing भी कर लिया. I will just finish recurring predominantly and Lynch. उसके बाद I will be looking at the sentences, but sentences should keep rolling, okay? Recurring का मतलब क्या होता है? Sentences should keep rolling, and recurring का मतलब होता है it is an adjective जिसका मतलब occurring again periodically or repeatedly, something that happens again and again, कुछ ऐसी चीज जो बार बार होती है और एक प्रॉपर टाइम इंटरवल के साथ होती है, राइट। सो पीरियोडिकली होती है कि अब हो रही है या इसके बाद हो रही है, या रिपीटेडली होती है, बार बार होती है। तो एनीथिंग दैट इज रेकरिंग इंसिडेंस इज एन इंसिडेंस जो बार बार होती है, ठीक है। सो रेकरिंग इंसिडेंस इज इंसिडेंसेस रिपीटिंग, ओके, या इंसिडेंसेस अकरिंग इन पीरियोडिक सक्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज predominantly. Predominantly जब भी word आएगा, so remember a lot of people use also predominantly. It is an adverb जिसका मतलब होता है mainly, okay? So whenever predominantly आप देखोगे तो आपको उसको replace कर देना चाहिए किस चीज से? Mainly से. Replace it with mainly. For the most part, okay? So it basically means for the most part या mainly is predominantly, ठीक है। So during the day, I predominantly focus on vocabulary. Okay, I'm predominantly focusing on vocabulary right now. Okay, in my preparation, I'm predominantly focusing on current affairs, or I'm predominantly focusing on critical reasoning, let's say, whatever is your focus. So mainly focusing on, majority of the focus is on, ठीक है, is predominantly. Lynch का मतलब क्या होता है? Lynch is also a very very important word जिसका मतलब होता है a group of people kill someone for an alleged offense without a legal trial, especially by hanging, ठीक है। So lynch करना किसी को is basically a group of people, अगर बहुत सारे लोग मिलके किसी को मार डालते हैं, क्यों? क्योंकि अलेजेड ऑफेंस होता है, क्योंकि वो मानते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो कोई आरोप लगा के उनपे उनको मार डालते हैं विदाउट लीगल ट्रायल, उनको लीगल ट्रायल के लीगल मेथड्स के थ्रू जाने नहीं देते हैं। दे बिकम अगेन द जज, जूरी, द एंड द एग्जीक्यूशनर, ओके, लिंचिंग के केस में, स्पेशली बाय हैंगिंग, पर्टिकुलरली बाय हैंगिंग, लेकिन अदर वेज ऑल्सो वी हैव सीन ऑफ मॉब लिंचिंग केसेस, है ना, बहुत सारे मॉब लिंचिंग केसेस देखे हमने। And lynching is again predominantly used for mob or riots, or in a group of people killing someone or stoning someone to death is lynching, okay? So these are the words, a little gory words today, क्योंकि हमारा passage भी वैसे ही है, it is related to a lot of slaughter and killing. So make sure that you're looking at it judiciously, okay, the entire passage, okay, and don't get carried away. These words are also important to know, right? So let's look at the sentences. Okay, एक minute. Hmm. The neighbors in the society, आयुषी का sentence पढ़ रही हूँ मैं, in the society have formed a vigilante, have formed a group of vigilante, okay, it is a person, right? Vigilante is a singular noun, so vigilantes or formed a group, vigilante group, okay, to keep an eye, not because Ayushi, I is starting with a vowel sound, so that's why an eye on the car parking. Very nice. Nishita, alacrity is good, but becoming vigilante is not good. It can cause scourge. Okay, so having alacrity is good, but becoming a vigilante
is not good because it can lead to a scourge or it can cause a scourge. Very nice. You again combine three words. Very nice, Nishita. My armed vigilante groups fight back against the gangs. Very nice, Triranga. Good job. Criminals, and first time it is away from the topic of not the first time. I think you have made sentences like this. Criminals are vigilantes, important to punish them. Criminals are not all criminals, but you can say some criminals are vigilantes and it is important to punish them. Okay, Pallab? Can we say that King Jong is a vigilante? No, Chandan, we cannot. Authoritarian, dictator, you can call all that, but not a vigilante. She allegedly used a voice changer when ringing her. She allegedly used a voice changer when I rang her. Okay, when I rang her. Ramu alleged that the crime was committed by Sham. Okay, very nice, Palak. Good job. She alleged use of. Okay, this. Your sentences are coming repeatedly, Neha. Is there an issue? Ramayan is. Okay, Nishita. Um, alleged um, incident. Okay, or Ramayan is an alleged mythological story. Okay, alleged mythological story. Okay. She alleged on Ram. She alleged something. Okay, कुछ चीज आरोप लगाना, but there is something that is being right alleged. तो कुछ कोई मैटर होना चाहिए वहां पर. Simran, okay. My female friend was convicted of murdering her drunken and allegedly violent husband. Very nice, Triranga. Sentence is absolutely correct. Sentence is absolutely correct. Chandan, which two last words? Which words do you want me to repeat? I will repeat once again. Okay, Palak. I am the messenger, so I will tell Neha, please spam. Na correct. Okay. He is allegedly claiming that he had done nothing. Okay, so very nice, Nancy. Good job. Sam has allegedly lied about his test scores. Very nice, Alpesh. Good job. Parents should be ever vigilant. So you are using it as vigilant. Very nice. Good job. When supervising their children online activities. Brilliant. Brilliant sentence, Billa. Political party are in two parts, left and right winged. Very nice. Nishita. Hi, Ria. Good afternoon. Raining keeps, okay, rain keeps recurring. Okay, rain keeps recurring. Okay, exams are recurring this year. Okay, or in a year. Exams are recurring in a year. Okay, very nice. She gave evidence in court against the attackers allegedly. Allegedly last में नहीं use करेंगे. Allegedly she gave evidence in the she allegedly gave evidence in the court against the attackers. Parents are mostly right-winged when speaking to their children. Very nice, Alpesh. Good job. Politics at home. Ishant, hi, good afternoon. Government always tries to avoid coup because coup is vigilantes. Okay, coup are done by vigilantes. Okay. Earthquakes in Japan are recurring in nature. Very nice, Kanish. Good job. If you do a work accordingly, then if it can cause courage. Very nice. If you do a work uh,
systematically, then it won't cause a scourge. Okay, अगर आप systematically कर रहे हैं तो scourge नहीं होगा. um, Love is recurring theme in my dictionary. Very nice, Triranga, good job. The mistake shouldn't be recurring. Very nice, Alpesh. He's been unfairly lynched in the media. Very nice, Palak, good job. I am predominantly preparing for CLAT. Okay, I'm predominantly preparing for CLAT. Simran, his audience consists predominantly of groups of travelers. Very nice, Neha. Good job. If you are predominantly focusing on this on one subject, you may fail. Okay, you may fail, Ishan. This relationship is recurring theme in her novels. Very nice. His audience consists predominantly of group of travelers. Again, the same thing. I am predominantly a dancer, but I I also cook. Very nice, Triranga. Good to know. She has fun with me. Uh, Recurringly यहाँ पर से अच्छा repeatedly सही रहेगा चंदन, not fitting well over there. Predominantly you will get bored in that movie. You will get more predominantly bored in that movie. Okay, Alpesh, just the placing of the word. Teachers teaches their predominantly subject better than all. Teachers teach their predominant subject better than all. Legal section in CLAT, where my predominantly focus. Legal section in CLAT is my predominant focus. Okay, Christy. If work is in my favor, then I do with full alacrity. Yes, very nice, Ishant. If work is in my favor, then I do it with full alacrity. He was lynched by the mob during protest. Very nice, Alpesh. Absolutely correct sentence. This is the most common usage of lynch. Very nice. He's predominant among new writers. He's predominant among new writers. Very nice, Ayushi. In Nagaland, vigilantes who time to time creating violence against government. In Nagaland, vigilantes are creating violence, creating violence from time to time. Okay, against government. Ayushi, was he was accused for lynching by aggressive mob. He was accused. So the lynching जिस पे हो रही है, that is the victim. That person is the victim, है ना? So he was victimized in a lynching. In a He was victimized in a lynch by the mob. Right-winged societies are not alacrious to adopt to modern culture, which can be scourged sometimes. Okay, Harshita, change the usage of alacrity to alacrious. Uh, it is a recurring process and a very expensive one. Very nice, Villa. Uh, Nexus and criminal because of using social media a lot. My friends will scourge in the future. Very nice. She became more involved in right-wing politics. Vigilantes is just a man lost in scramble for his own gratification. Christopher Nolan said this. Very nice, Akarshan. Very nice. Uh, Hi, Agarjan. Good afternoon. Chandan, I have given a gift to my sister, and when I asked that gift, she isn't giving me and saying that you can't get me, ask me allegedly. Uh, Not the correct usage, Chandan. एक बार फिर से सोचना है इस word के बारे में. Sometimes a little problem looks like a scourge. Okay, moving on to the next set of word. Next is venality. Venality का मतलब क्या होता है? Venality is a noun जिसका मतलब a state or quality of being venal. जिसका मतलब क्या होता है? Willing to behave dishonestly in exchange for money. Okay, venal का मतलब होता है ये कि कोई भी इंसान अगर venal है, that means the person is कोई भी पैसे के लिए
कोई भी डिसऑनेस्ट काम करने को तैयार है, कोई भी पैसे के केस में कोई भी डिसऑनेस्ट काम करने को तैयार है, और उसका जो स्टेट या क्वालिटी होता है उसको कहते हैं विनैलिटी, ओके, विच इज अ नाउन, ओके. The venality has to stop if we want to stop corruption, okay. The venality has to stop if we want to stop corruption. So venality का मतलब ये होता है कि a state or quality of being venal. Being venal का मतलब क्या होता है, पैसे के लिए कुछ भी करेंगे, okay. That is venal and this is venality. Acuity क्या होता है, इज अ शार्पनेस और कीननेस ऑफ थॉट, विजन और हियरिंग, ठीक है. कोई चीज में भी तेज तरार विजन होना या शार्प लिसनिंग होना या शार्प थिंकिंग होना इज कॉल्ड एक्यूटी, ओके. हिज एक्यूटी टू रीजनिंग impressed me, okay. Acuity. Or his acuity impressed the interviewers, okay. So that means the sharpness or the keenness of his thought, your vision, your hearing impressed everyone, okay. प्रीटेक्स्ट क्या होता है, प्रीटेक्स्ट मतलब होता है, इट इज ऑल्सो अ नाउन जिसका मतलब होता है अ रीजन गिवन, गिविंग sorry, a reason given in justification of a course of action that is not the real reason, ठीक है. excuse, आप pretext को क्या कर सकते हैं, किस चीज से replace कर सकते हैं, simply by thinking about it as excuse. तो जब भी pretext दिखेगा you can replace it with excuse, या आप sentence बना सकते हैं excuse से and you can replace the word excuse with pretext. acquitted का मतलब क्या होता है, acquitted का मतलब होता है free. Free someone from a criminal charge by a verdict of not guilty. अगर verdict आ जाता है not guilty, उसको free कर देना because the person is not guilty of that crime, that means the person has been acquitted, okay. मतलब उसकी सजा माफ हो गई है क्योंकि वो दोषी नहीं पाया गया है, ओके. सो समवन हु इज acquitted is नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, तो उसको उसके चार्जेस हटा दिए जाते हैं, सारे चार्जेस हटा दिए जाते हैं, ठीक है. एम्ब्लेमेटिक, एम्ब्लेमेटिक का मतलब क्या होता है, एम्ब्लेमेटिक एम्ब्लम से आया है, एम्ब्लेमेटिक विच इज एन एडजेक्टिव, तो यू विल यूज इट एज अ सिंबल, ओके. Serving as a symbol of a particular quality or concept, symbolic, anything that is symbolic. तो emblematic को आप किस चीज से replace कर सकते हैं, symbolic से. anything that is representing something, symbolic of something is emblematic, ठीक है. uh, so he wanted to send a message, so burning the car was emblematic uh, of his message, okay. So emblematic was a symbol of his message, or was a symbol of his gang, okay. Emblematic of his gang, okay. So that means it was a symbolic move of his gang. Emboldened, though m hai, okay, two prefixes with m. M is to इनेबल, जनरली साथ में के लिए यूज करते हैं, टुगेदर विद, और सो या किसी चीज को इंक्रीज करना इज एम करना, इन सो व्हेन देन वी ऐड द प्रीफिक्स एम. एम्बोल्डन का मतलब क्या होता है, इट इज अ वर्ब व्हिच मींस गिव समवन द करेज और कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग. सो कोई भी चीज को किसी को भी एम्बोल्डन कर रहे हो अगर आप, तो आप उनको इनकरेज कर रहे हो या आप उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हो. आई एम एम्बोल्डिंग यू टू मेक sentences so that because I know it will be fruitful for you. Okay, so I'm emboldening you to make sentences because I believe that it will strengthen your vocabulary. Okay, so give the courage or confidence to do something. Embolden. Okay, so again it is a verb. यहाँ पर verb है, so इसको आप action की तरह use कर सकते हैं. Emboldened, emboldening. Okay. कंडोन का मतलब क्या होता है, ओके, लेट्स लुक एट द सेंटेंसेस टिल देन बिफोर वी मूव ऑन. प्रिडोमिनेंटली कर लिया था. राइट विंग, right wing societies are not
alacrity to adopt, do not have the alacrity to adopt to modern culture, adapt to modern culture, which can be discouraged sometimes. Okay, Harshita? It is a recurring process and a very expensive one. ये सब मैंने बता दिया था. Very nice. Christopher Nolan भी देख लिया था. Sometimes a little problem looks like a huge scourge. Okay. Have I done something wrong that my sentences are being ignored predominantly? Kanishk, no, not at all. I'm not ignoring your sentences at all. I'm saying very nice. Good job. He was a reformer of abuses, publishing the most severe acts against venality. Very nice, Neha. Very nice. Good job. That officer is well known for being venal and easily bought. Very nice, Ayushi. Good job. Dream chaser, hi. Greedy people can do any work, any venal work, okay? Any venal work, okay? Greedy people can do any venal work. यहाँ venality नहीं आएगा, noun नहीं आएगा. लक्ष्य क्लैट के लिए कोचिंग बताइए. आइए अनअकैडमी आइए. Okay. A high acuity patient was admitted in the hospital. A high acuity patient was admitted in the hospital. Very nice. Okay. Um, but acuity, ठीक है. When I started recurring the same activity, when I don't recur, okay, I के साथ हम recurring नहीं लगाते. I am not recurring, okay. People don't recur, okay. Things recur, patterns recur, okay. So uh, when I started um, when my activity started recurring, I could see predominant improvement while a task, performing a task, and I am doing it with alacrity now. I have acuity towards your classes. Very nice, Simran. I am glad that you do. I hope that it stays the same. I admitted the keenness of his mind. I admired the keenness of his mind. Very nice. But where is the word? Keenness आपने use किया है. Okay. My acuity to make sentences are really bad. That's why it is getting ignored. No, Kanishk, it is not getting ignored. And I'm reading all your sentences. Yeah, I read this one as well. She and sentence is absolutely right, by the way. Okay. She went back to her friend's house on the pretext that she had forgotten her purse. Very nice. How clever. Very nice, Neha. Good job. He is acuity to make excuses. He has acuity to make excuses. Okay, he has the acuity to make excuses. Me and my science team and I work on improving visual acuity. Very nice, Tridanga. Just that my जब भी आप second person या third person के साथ बोलते हो, then you are also always supposed to keep the first person in the end. My friends and I, my family and I, my team and I, okay? Politics as a field of grasping is like a liar to candid mental acuity, then to sharpen it. आयुषी मुझे कुछ समझ में नहीं आया. Politics as a field of grasping Politics as a field of grasping something. You grasp something, इसके बाद एक word आना चाहिए, is like politics as a field of grasping moves या कुछ ऐसा, is like a liar to candid mental acuity, then to sharpen it. Candid is honest, okay? So
It's not fitting well. Rephrase it, Ayushi. I think you can do a better job. She used her headache as a pretext for not texting me. Very nice, Triranga. Good sentence. Corrupt officers are notoriously venal. Okay, notoriously venal. Adverb use करेंगे notoriously venal. Very nice, Ishan. The incident provided the pretext for war. Very nice, Ayushi. Good job. Buddha is emblematic of peace. Very nice, Christy. Good job. Teacher emboldened us for doing good. Very nice. Yes. Good job. Uh, he was acquitted of the murder of his wife. Okay, very nice, Ayushi. Okay, ठीक है, Kanish. Then it is fine. Um, I was involved in a business where the conduct of some was so venal, it bore it bordered on criminal. It bordered on criminal. Very nice, Akarshan. Good job. What a sentence. I was involved in a business where the conduct of some uh, was so venal. Yes, it bordered on criminal. Okay, it bordered on criminal. Very nice. Good job. Um, my patient always emboldened me to not give up from any scourge in life. Very nice. My parents, sorry, not my patients. So I'm sorry, Christy. Good job. Sentence is absolutely fine. Pets are emblematic of faithfulness. Very nice, Ayushi. The court acquitted me of the crime. Very nice, Triranga. Muhammad bin Rasid has acuity for Dubai future, for the future of Dubai. Okay, Shan. He was emboldened to ask her to marry him. Very nice, Ayushi. Good job. When I ask my friend to give treats, they always give pretext. Okay, pretext. Okay, I left classroom early under pretext of nursing a sore elbow. Very nice, Akarshan. Good job. You make very impressive sentences. The jury acquitted me on all charges. Very nice, Billa. Dogs are emblematic of faithfulness. ये मैंने पढ़ लिया. The abandoned child was removed from her home and placed with a foster family. Okay, you've moved to foster now. Okay. Volunteers do an emblematic job. Okay, emblematic. And Nancy, because it is a vowel. Uh, your classes are emboldening me to read English. Very nice, Chandan. Hungry and poor are being venal for food. Are being venal for food. Okay, Christy, very nice. You always embolden us. Ah, thank you, Nancy. Emboldened by her smile, I asked her to dance and she accepted. Yes, Riranga. After locking at your cat, I became emboldened to attend your video call. Okay. After locking at your cat, okay. Doesn't make a lot of sense, but ठीक है. So make another sentence, please. Chandan, for some people, being venal is compulsion, is a compulsion. Very nice. There is so much madness for money in today's world, which is leading to venality. Very nice, Harshita. Good job. Kanishk, I am acquitted of murder, uh, dacoity, okay, kidnapping, extortion, and several other heinous crimes. Very nice, Kanishk. Uh, okay, Chandan. Unacademy's emblematic is good. Emblematic representation is good. Okay. Was acquitting. Thank you, Chandan. And little changes. Rustam was acquitting from all liable charges on him. Acquitted of all liable charges on him. Preposition of लगता है.
I used to give pretext when I don't complete my homework in childhood days. Everybody used to, don't worry. Everybody got creative with it, but also lazy with it. ठीक है? Condone is the next word, which means accept. क्या चीज accept करना? कोई भी behavior that is considered morally wrong or offensive, उसको accept कर लेना, ठीक है? Is condoning something. Okay, so condone something is accept behavior that is considered morally wrong or offensive. कोई भी ऐसा behavior जो morally wrong consider किया जाता है, offensive consider किया जाता है, उसको accept कर लेना is condone. Okay. Then is foster. आप again American culture में you will hear a lot of foster care. Foster करना मतलब क्या होता है? Encourage the development of something, especially something desirable. ठीक है? कोई भी चीज को develop करना, encourage करना to develop. ठीक है? किसी चीज को foster करना is encouraging growth. ठीक है? कोई भी चीज को बड़ा करने में या उनको encouragement देने में अगर कोई encouragement दे रहा है, that person is providing fostering growth. Okay, fostering growth. ठीक है? So verb है, so you can use it in the fostering, fostered way. Absolutely fine. Disharmony है next. Lack of harmony or agreement. Discord से replace कर सकते हैं disharmony को. अगर शांति नहीं है, agreement नहीं है, तो that is called disharmony. It can also be called discord. डिली डैली क्या होता है? डिली डैली इज बहुत ज्यादा सुना होगा टीचर से, डोंट डिली डैली. ओके, डिली डैली इज अ वेस्ट टाइम, is basically to waste time through aimless wandering or indecision. आप टाइम पास कर रहे हैं बिना किसी रीजन के, आप इधर उधर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं, बेसिकली टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इज डिली डैलिंग. ओके, इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग इंपॉर्टेंट यू आर डूइंग समथिंग completely or utterly useless. ठीक है, is dilly dallying. Okay, so it is a verb, so dilly dallying or dilly dallied. Okay, एंड जूरिस्प्रूडेंस भी हमने देखा है पहले. ये वर्ड जूरिस्प्रूडेंस इज जूरिस्प्रूडेंस, अगर हम एक फिलोसफी की तरह से देखा जाए, इसको स्कॉलरशिप के स्कॉलरी की तरह से देखा जाए, तो इट इज बेसिकली प्रिंसिपली कंसर्न विथ व्हाट इन जनरल लॉ इज एंड ऑट टू बी. क्या होना चाहिए लॉ, और क्या क्या है लॉ और क्या होना चाहिए, जिसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं. हाउ पर्सन्स एंड सोशल रिलेशनशिप्स आर अंडरस्टूड इन लीगल टर्म्स, and of the value in the values in and of law. So basically jurisprudence का मतलब ये हो गया कि आप लॉ के हिसाब से काम कर रहे हैं. ओके, इन सिंपल इन इन सरल भाषा में अगर बोला जाए, jurisprudence is acting इन अकॉर्डेंस विथ लॉ. ठीक है, आप लॉ के को मद्देनजर रखते हुए या लॉ के अंडर काम कर रहे हो, लॉ के रेडार के अंडर काम कर रहे हो, इज हैविंग अ जूरिस्प्रूडेंस. लॉ को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हो. ओके, सो police caught the criminals and acted with jurisprudence. That means they did not do anything that was considered either venal or lynch. They acted with jurisprudence. That means they acted with accordance with the law. And moving on to the last set of words. आज बहुत ज़्यादा words है, मैंने बताया था. Let's look at the sentences till then, and then we will move on. As a kind person, I'll forgive you and condone everything. Very nice, Triranga. Good job. All right. Just 1 second. Okay, Ayushi, I am trying to foster an interest in classical dance. Very nice, Ayushi. Ayushi, good job. Okay. I'm trying to foster an interest in classical dance. Good job. Avara person for किसके लिए आवारा पर्सन? नो, none of these are आवारा पर्सन. Okay, Nancy. Uh,
There seems to be some disharmony of strict violations. There seems to be some disharmony and violations and strict violations. Okay, and strict violations. I am condoning my sister, not with preposition नहीं आता condone के बाद, condoning my sister that I ate her chocolate bar. Very nice, Ashant. Ate. Past. A good friend will condone your faults. Very nice, Simran. My father emboldened me to study. Very nice, Madara. And remember, emboldened हो जाएगा, ठीक है इसका. Okay, you add ed to it. Emboldened, past form. Uh, Can you give example of condone? There are many over here. देखो ना, a good friend will condone your faults. जो सिमरन ने बनाया है is a good sentence. I'm condoning my sister that I ate her chocolate bar is another example. So a lot of examples. अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा, then I will also make a sentence. Can you give me an example? Okay, don't dilly-dally, just get your ranks and let's meet. Very nice, Ayushi. I am a very jurisprudent person. Okay, I am a very jurisprudent person. A good friend will never leave you for your condone नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ for your mistakes होना चाहिए यहाँ पर चंदन. Dilly dally, don't dilly dally, or he has been dilly dallying his preparations and playing video games. Okay, or बेसिकली जहां भी आप प्रोक्रास्टिनेट यूज कर सकते हैं वहां आप डिली डैली भी यूज कर सकते हैं. टाइम वेस्ट जहां भी यूज कर सकते हैं वहां डिली डैली भी यूज कर सकते हैं, है ना. समटाइम्स वी डिली डैली, देन लेटर give pretext for not completing the task. Very nice, Harshita. You use both of it and absolutely correct. I am fostering myself to read books. Okay, to read books, Nancy. I'm fostering myself. Encouraging होता है ना, in fostering, encouraging myself to read books. Did it foster hope or despair? Very nice, Akarshan. The practice of jurisprudence is very different from other types of interpretation. Very nice, Ayushi. Good job. Disharmony ka example. Uh, mm, the rift between the two brothers created a lot of disharmony amongst the family members. ठीक है, तो दरार पैदा हो गई, झगड़े होने लगे, is disharmony. ठीक है. Jurisprudence actions Jurisprudent actions can avoid disharmony in the society. Very nice, Harshita. Sports authorities do not condone the use of, यहाँ पर does not नहीं, do not. Sports authorities आपने लिखा है ना, तो do not condone the use of performance enhancing drugs. Very nice, Akarshan. Very nice. My friends fostering to clear CLAT and become emblematic of his family or her family, है ना. Emblematic for her family. Don't dilly dally on useless things. Correct, Chandan. As foster parents, we had cared for our share of baby bottoms. Very nice, Bella. The public deserves to know how the governing jurisprudence is developing. Wonderful, Shandar. Where is Alpesh? Alpesh is not making sentences and I can't see him. Now, next word is slaughter. Slaughter is basically animals को kill करना for food is to slaughter. तो slaughter houses भी होते हैं जहां पर animals that are for dietary purposes are slaughtered. Okay, slaughter houses में animals are slaughtered. So they are killed for food.
एक्सपेंसिव का क्या मतलब होता है? एक्सपेंसिव इज एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है कवरिंग अ वाइड एरिया इन टर्म्स ऑफ स्पेस और स्कोप। बेसिकली जहां भी आप एक्सटेंसिव यूज कर सकते हैं वहां पर आप एक्सपेंसिव भी यूज कर सकते हैं। Okay, so expansive is an adjective. So his expansive thoughts, okay, or his extensive thoughts on the process um, was remarkable. ठीक है? और he has some expansive um, ideas for the company. Okay, so that means something that will cover a lot of space and scope, has a lot of scope. Okay, interpretation क्या होता है? Interpretation is not interpretation. Interpretation is the action of explaining the meaning of something. Explanation को हम interpretation कह सकते हैं. ठीक है? So interpret करना मतलब किसी चीज का explanation समझना, राइट? सो इंटरप्रिटेशन इज एन एक्सप्लेनेशन। ओवरटर्न करना मतलब अबॉलिश करना, इनवैलिडेट करना या रिवर्स करना कोई चीज को, कोई सिचुएशन को, या जो प्रीवियस डिसीजन है उसको ओवरटर्न कर दिया इस जज ने। दैट मीन्स द जज इनवैलिडेटेड या रिवर्स कर दिया जो प्रीवियस डिसीजन था उसको। इंपॉर्टेंट वर्ड अगेन, husbandry. Next is husbandry, which is the care, cultivation and breeding of crops and animals. कोई भी ऐसी जगह जहां पर एनिमल्स को या क्रॉप्स को केयर और कल्टिवेशन और उनकी ब्रीडिंग होती है, उस जगह को एनिमल हस्बेंड्री, उस जगह को एनिमल हस्बेंड्री जगह कहते हैं। ओके, स्ट्रिंजेंट का मतलब हमने देखा है पहले, दिस इज ऑल्सो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड। स्ट्रिंजेंट अगर हम रेगुलेशंस की बात करें, रिक्वायरमेंट्स की बात करें या कंडीशंस की बात करें तो स्ट्रिक्ट या प्रिसाइज, एग्जैक्टिंग। ओके, तो कोई भी स्ट्रिक्ट, बेसिकली स्ट्रिंजेंट इज नथिंग बट स्ट्रिक्ट। इतना आपको डेफिनेशन नहीं याद रखना है, स्ट्रिंजेंट मीन्स स्ट्रिक्ट। सो स्ट्रिंजेंट लॉज के लिए यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस के लिए यूज कर सकते हैं। स्टिग्मेटाइजेशन भी हमने देखा है, स्टिग्मा देखा था, अभी स्टिग्मेटाइजेशन इज द नाउन फॉर्म। ठीक है? स्टिग्मेटाइज करना किसी चीज को, द एक्शन ऑफ डिस्क्राइबिंग और रिगार्डिंग समवन और समथिंग एज वर्दी ऑफ डिसग्रेस और ग्रेट डिसअप्रूवल इज स्टिग्मेटाइजेशन। किसी भी चीज को डिसग्रेस घोषित कर देना इज स्टिग्मेटाइजेशन। ठीक है? impudent, next word is impudent. Again, this is something that we have seen before. Impudent का मतलब होता है not showing due respect for another person. Impertinent, कोई भी दूसरे इंसान के लिए respect नहीं दिखाना is impudent, which is an adjective. Condemn, the final word is condemn. ये भी बहुत ही important word है because we have seen this word before. And condemn करना मतलब express complete disapproval of, कोई भी चीज का complete disapproval करना is condemn करना। ठीक है? सेंसर करना, आई थिंक ईशांत gave me this word, condemn का सेंसर करना, and I said censor is more close to banning, and but you were absolutely right, synonym है इसका। I have only given it as a synonym, लेकिन it does not mean the same thing. Condemn और censor does not mean the same thing, but almost similar in meaning. रोकना किसी चीज को is censor करना, condemn करना is express great disapproval of। ठीक है? So these were the words of today. Let's get started with the vocabulary. I hope सारे words इसमें, सारे के सारे words important और easy words हैं. I don't think इसमें बहुत ज़्यादा explanation की ज़रूरत है. But if you want me to explain any of the words again, do let me know. ठीक है? Uh, hmm. Dilly dally means procrastinate. Yes, Ishan. Thousands of people were slaughtered in the war. Ayushi, yes, we can use it for people as well. Uh, Generally, जब हम slaughter use करते हैं तो हम animals के लिए use करते हैं. But when there is mass murder, तब हम slaughtering भी बोलते हैं, right? Very nice. There is disharmony among these two families. Okay, there is disharmony. Okay, disharmony among these two families. If I have been unfair, you can slaughter me. Okay, Akarshan. He has, यहाँ पर has होना चाहिए सिमरन। He has, he she it के साथ क्या लगता है? Has लगता है। He has many
expansive ideas, expensive nahi, expansive ideas about that project. Very nice, Simran. She is in an expansive mood for the party tonight. Very nice, Ayushi. Madara, people are slaughtered. People slaughter, okay? People are slaughter, nahi, people slaughter the animals and they are cruel. Okay, Peter, sorry. People slaughter animals and that is cruel. Okay, Madara, he would be found guilty under a strict interpretation of the law. Very nice, Ayushi. Very nice. Good job. क्या sentences बनाते हो आप भी? Very nice. Uh, Sociology can help us eradicate social stigma. Wow, wow. Harshita, very nice. Good job. Fire, oh, fire. we have to we have impudent towards our teacher. Okay, we have impudent towards our teacher. Sorry. Ayushi, the Court of Appeal overturned the earlier decision. Very nice, Ayushi. Good job. On the occasion of Eid, many people slaughter the goat for their. Oh, no, no, no. Beverages nahi hoga. Beverages is something that you drink. Okay, beverages, all beverages menu में जो beverages आता है, so this that is the drinking menu. Anything that is portable that you drink, like mocktails and shakes and smoothies and juice and cold drinks, all these are beverages. Okay, so for a feast, for their feast, you can say. Okay, for a feast. um Ishan's Supreme Court has to overturn extent reservation policy in Karnataka. Um, very nice, Ishan. There was a lecture on animal husbandry. Very nice, Ayushi. People have to condemn slaughtering of animals. People have to condemn slaughtering of animals to be cruel to and try to expand, try to have an expansive thought and start doing animal husbandry, and we need to make stringent rules regarding anti-slaughter. Okay, regarding anti-slaughter. Okay, Nishita, good job. सब साथ में लपेट दिया आपने. Stringent security measures have been introduced at all airports. Very nice, Ayushi. You interpret very well every word. Very nice, Christy. Very nice. In science stream, there are expansive scope for future career. Very nice, Nancy. Good job. Your skin is the most expansive part of your body. Good to know. Will. The judge was condemning recurringly on devil's advocates arguments. Devil's advocates arguments. Very nice, Chandan. थोड़ा सा complicated sentence, लेकिन ठीक है, चलेगा. The Supreme Court overturned the verdict. Very nice, Nancy. I felt stigmatized in math class when I was not able to solve the problem. Very nice, Ayushi. I feel the same. I have felt the same in every math class. People who have been stigmatized feel as they are transforming from a whole person to a tainted one. Very nice. People who have been stigmatized. बहुत ही philosophical. आकर्षण का जितने भी sentences होते हैं, they are creatively made. आयुषी के जितने भी sentences होते हैं, they are factual statements, like writing in a newspaper or column. And Akarshan is more on the creative side. So is Nancy's statements are always also on the factual side, whereas if we take Triranga's statement again on the creative end. So good job, you guys. See, it tells a lot about you, how you think as well. Uh, Yours is also direct, very factual, Nishita, because you try to associate it with the daily usage, daily application. So yours is as well
a very analytical statement. Our parents and elder siblings are stringent when it comes to using smartphones and they condemn overuse of it. So Harshita is also factual one. Okay, so yes, good job, Harshita. You are also on creative side, Billa. Sometimes you keep switching between creative sentences to factual sentences, abstract to factual. So can't really say about you. You are both sided. All right. Now, since the vocabulary is over, these were all the words that we did. हमने इतने सारे words किए. हमने alacrity किया, हमने scourge किया, vigilantes किया, allegedly किया, right winged किया, recurring किया, predominantly किया, lynch, venality, acuity, pretext, acquitted, emblematic, emboldened, condone, foster, disharmony, dilly-dally, jurisprudence, slaughter, expansive, interpretation, overturn, husbandry, stringent, stigmatization, impudent, condemn. ये सारे words हमने किए हैं. Now it is time for the film was condemned for its obscenity. Very nice, Ayushi. Good job. Madara, I can't interpret the editorial. Very nice. I can't interpret the editorial, and that's why you have the interpreter over here. Okay. Okay. So, moving on to the important announcements that जो MHCT law exam था जो 29th और 30th of March को होने वाला था, this has been postponed and will be happening in the month of April itself, before way before your MHCT exam. So please wait for the announcement to come and do give these two mock tests. Those who were complaining about the price hike know that there is a flat 25% off going on any subscription. All you got to do is enter my code while enrolling, that is VP10, because I am supposed to be your favorite educator. So do enter my code when you are subscribing to anything. Level up batch is someone was asking me about plus batches. So this is a batch which has started from 30th of March. इससे पहले और एक batch था ACE Legal. I'm again part of that batch as well for plus classes. So it is a foundational batch for CLAT and AILET aspirants of 2024. And again, if you are subscribing, please do not forget to use my code, that is VP10. VP10 while enrolling. MHCT crash course is available at a discounted price of 4,999. So jaldi se enroll kijiye and don't forget to use my code while enrolling. VP10 is my code. Again, if you're enrolling yourself in Law Vistara batch, which is an intensive batch for LSAT, SLAT, and MHCT, make sure that you're using my code, that is VP10, because it is available at a discounted price of 10,999 and you're getting a 5% discount on all your subscription. The Warriors is coming soon, and this is a batch which is for droppers and CLAT aspirants, droppers of CLAT aspirants for 2024, and I will be taking English language in that batch. So please make sure that you enroll in this batch, because detailed information and preparation will go on, and don't forget to use my code, that is VP10, to enroll. आते हैं हम आज okay. What do you want me to reply about? I want to give CLAT in December 2025 in this to start preparing now. 2025 Insta shots. Now, अगर आप 2025 में CLAT देने का सोच रहे हो, so no amount of preparation is कॉल्ड कि अब इतना पहले से तो प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं होता है. इफ यू प्रिपेयर अर्लियर, आपके पास अपर हैंड होगा कि आप बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं. हाँ, आपको करंट अफेयर्स 2024 का नहीं देखना होगा, बट अदर थिंग्स लाइक वोकैबुलरी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, क्रिटिकल रीजनिंग, ये सारे मैथ्स
ये सारी चीज आप प्रैक्टिस कर सकते हो पहले ही से, सो दैट यू हैव एन अपर हैंड, सो दैट विल गिव यू एन एडवांटेज। तो अगर आपको प्रिपेयर करना शुरू करना है, बी माई गेस्ट एंड डू स्टार्ट प्रिपेयरिंग सून। Okay, let's move on to the editorial. Lives at stake is the headline, is the title of the editorial. The Karnataka police must act with alacrity in bringing murderers to book. Okay, so murderers to book मतलब उनको लाना चाहिए, उनको कानून के हवाले करने में उनको ईगरनेस दिखाना चाहिए, किसको? कर्नाटका पुलिस को। सो दिस इज द कंक्लूजन दैट द ऑथर हैज रीच टू, दिस इज द conclusion of this passage. Okay, so let's move on, let's look at the passage. The scourge of murders where cattle traders or transporters have been attacked by self-styled cow vigilantes has surfaced again in Karnataka on Saturday. A 39-year-old assistant driver of a van transporting cattle was allegedly tortured and killed by a right-wing activist and his associates. So this is the main idea. यहाँ से यहाँ तक is इसी चीज को एक्सपैंड करते करते जितना भी डैश दिख रहा है, जितने भी डैश दिख रहे हैं, इट इज एक्सपैंडिंग द सेम थिंग। ओके, सेम कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, बट इलैबोरेट एग्जाम्पल के साथ। सो ऑन सैटरडे, ये क्यों बोल रहा है काउ विजिलेंटीज हैज सरफेस्ड अगेन? कैसे सरफेस अगेन हुआ ये? मतलब बेसिकली अ स्कर्ज ऑफ मर्डर्स, जिसमें जितने भी ट्रांसपोर्टर्स और ट्रेडर्स हैं, जो कैटल ले जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको सेल्फ स्टाइल्ड क्यों बोला गया? काउ विजिलेंटीज, ऐसे लोग जिन्होंने खुद अपने हाथ में कानून ले लिया है और अपने आप को काउ विजिलेंटीज कह रहे हैं, हैज सर्फेस्ड अगेन इन कर्नाटका। मतलब पहले भी एक ऐसा केस हुआ था, अब वापस से आया है, एक ऐसा केस उभर के आया है ऑन सैटरडे। ये सैटरडे को क्या हुआ? 39-year-old असिस्टेंट ड्राइवर ऑफ अ वैन ट्रांसपोर्टिंग कैटल वाज अलेजेडली टॉर्चर्ड। क्या क्लेम किया गया है? कि उसको टॉर्चर किया गया और उसे मार दिया गया बाय राइट विंग एक्टिविस्ट एंड हिज एसोसिएट्स। तो राइट विंग एक्टिविस्ट और उसके एसोसिएट्स ने अलेजिडली टॉर्चर और किल कर दिया है एक असिस्टेंट ड्राइवर को। द इंसिडेंट मस्ट बी सीन एज, तो ये हो गया हमारा मेन आइडिया, राइट? दिस इज आवर मेन आइडिया कि इसी के बारे में पूरा एडिटोरियल है। वी गेट टू नो दैट द इंसिडेंट मस्ट बी सीन एज वन अमंग रेकरिंग murderous acts across the states but predominantly in the north of India. ये इंसिडेंट को हम कैसे देख सकते हैं? ऐसे इंसिडेंट्स देख सकते हैं ये जो रिपीट हो रही हैं, बार बार हो रहे हैं अक्रॉस स्टेट्स, मतलब सारे जगह पे हो रहे हैं, सारे स्टेट्स में हो रहे हैं, लेकिन मेनली कहाँ हो रहे हैं? नॉर्थ ऑफ इंडिया में। The murder of Pehlu Khan in Rajasthan, who was transporting cattle to Muhammad Akhlaq in Dadri, Uttar Pradesh, on the suspicion of storing cow meat, it was proven to be false. अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पर, जो ये जो डैश के बीच में है ना, ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये डैश के बीच में कर क्या रहा है। जो डैश के बीच में, अब वी कैन स्ट्रेट अवे कनेक्ट दिस लाइन, ये लाइन यहां से यहां तक हम सीधा यहां कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? इट वॉज प्रूवन टू बी फॉल्स। Two tribal men lynched by alleged activist of the Bajrang Dal in Sironi. Okay, Sioni. Sioni में क्या हुआ? मध्य प्रदेश। And scores of such incidents, the venality of those committing the murders has been matched by the acuity by law enforcement agencies in implementing cattle slaughter laws to find a pretext for these acts while not bringing those responsible to book. ओके, सो बेसिकली क्या बोल रहे हैं? जितने भी केसेस देखा गया है, उत्तर प्रदेश में जो केस देखा गया है, राजस्थान में जो केस देखा गया है, मध्य प्रदेश में जो केस देखा गया है, जिसमें अब ये उत्तर प्रदेश वाला जो केस है, इसमें क्या बोला गया है? कि ऑन सस्पिशन ऑफ स्टोरिंग काउ मीट। अब उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है? कि वो गलत ठहरा दिया गया था, ठीक है? एंड ये दो जो लिंचिंग हुई है दो ट्राइबल मैन की, बजरंग दल ने करी है, alleged activist allegedly,
इन मध्य प्रदेश ये सारे इंसिडेंट्स किस चीज को दिखा रहा है कि पैसे के लिए लोग कुछ भी कर देंगे, कुछ कोई भी हद तक चले जाएंगे। और वो किस चीज को एक्सक्यूज मान के कर रहे हैं, ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जब इम्प्लीमेंट किए थे इन इम्प्लीमेंटिंग कैटल स्लॉटर लॉज, तो उसका एक्सक्यूज लेके ये सारे इनको रिस्पॉन्सिबल भी नहीं ठहरा रहे कि उसके वजह से ये हो रहा है, तो उनको रिस्पॉन्सिबल भी नहीं ठहरा रहे हैं। That the murders of Pehlu Khan was acquitted for the lack of prompt police action is emblematic of this trend. अब इन पहलू खान का जो मर्डर हुआ था उसको क्या बोल रहा है कि this was the symbol of lack of police action, तुरंत पुलिस एक्शन की कमी को दर्शा रहा है ये वाला केस. Okay, so this is the example that the author has given to substantiate his point कि क्या ये केस बता रहा है. द रेकरेंस ऑफ दीज एक्ट्स इज ऑल्सो अ कॉन्सिक्वेंस, और ये किस चीज का ऑल्सो अ कॉन्सिक्वेंस, ये किस चीज का और भी कॉन्सिक्वेंस है ऑफ इम्बोल्डनिंग ऑफ दीज राइट विंग एक्टिविस्ट. ऑथर बोल रहा है कि ये इनके राइट विंग एक्टिविस्ट का की जो हिम्मत बढ़ गई है वो भी इससे 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 यही पता चल रहा है कि उनकी हिम्मत बढ़ गई है. रेकरेंस और ये जो बार बार रिपीटेड इंसिडेंसेस ऐसे हो रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि राइट विंग एक्टिविस्ट जो जो भी हैं उनकी हिम्मत बढ़ गई है. who showed little regard for human lives as opposed to their perceived religious belief on cow slaughter. तो उनको ये जो राइट विंग एक्टिविस्ट हैं जिनकी हिम्मत बढ़ गई है वो क्या देख रहे हैं, वो ह्यूमन लाइफ से ज्यादा, इंसानियत से ज्यादा, ह्यूमन रिगार्ड से ज्यादा कि कोई इंसान है उसको मार रहे हैं, उससे ज्यादा वो क्या देख रहे हैं कि ये जो उनकी रिलीजियस परसीव्ड, जो जैसा वो समझे है रिलीजियस बिलीफ है जो उनका काउ स्लॉटर पे, उसको ऊपर रख रहे हैं, उसको डोमिनेंट थॉट रख रहे हैं देन कीपिंग इस चीज को समझना कि ह्यूमन लाइफ्स के साथ आप ऐसा कर रहे हो, राइट. Another common factor that is more often the case is that these acts recurring in states ruled by Bharatiya Janata Party (BJP) and are generally condoned by its fellow travelers in the संघ परिवार. तो ये जितने भी कॉमन और क्या कॉमन फैक्टर देखा जा रहा है कि ये जितने भी एक्ट्स हो रहे हैं कहाँ पर हो रहे हैं, जहां प्रिडोमिनेंटली कौन है, बीजेपी की, बीजेपी का कंट्रोल है, राइट. सो The opposition in Karnataka, अब ये पैराग्राफ खत्म हो गया. The author has condoned this act and he's saying that it is being repeated. और ये रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि राइट विंग एक्टिविस्ट की हिम्मत बढ़ गई है और ये भी कह रहे हैं कि ये दिखाता है कि पुलिस प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं ले रही है. दिस वॉज द पैराग्राफ. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. थैंक यू क्रिस्टी. बीजेपी की गवर्नमेंट है जहाँ, ठीक है. राज है मैं कहना चाह रही थी, बट राज वुड बी नॉट द करेक्ट वर्ड फॉर इट. द ऑपोजिशन इन कर्नाटका हैज राइटली sought to put the government in the dock and to highlight how this could foster communal disharmony. तो ऑपोजिशन ने राइटली, अभी ये राइटली क्या किया है, सही किया है. द ऑथर्स व्यू, यहाँ पर ये क्या पता चल रहा है कि ऑथर का ओपिनियन है क्या है कि गवर्नमेंट को उनकी गवर्नमेंट इन द डॉक एंड टू हाईलाइट, यहाँ पर पुट गवर्नमेंट इन द डॉक का मतलब क्या होगा, what can you think of, यहाँ पर क्या मतलब हुआ इसका. The opposition in Karnataka has rightly sought to put the government in the dock and to highlight how this could foster communal disharmony. और उन्होंने ये भी किया है, उन्होंने गवर्नमेंट को तो डॉक में लाया ही है और क्या किया है, साथ ही साथ हाईलाइट भी किया है कि इस वजह से कितना ज्यादा कम्युनिटी में डिसहार्मनी फैलेगा. ठीक है, कम्युनल डिसहार्मनी फैलेगा मतलब कम्युनल रिलीजियस बेसिस पे डिसहार्मनी फैलेगा. एनी डिली डैलीइंग by the Karnataka police is bringing the guilty to book will be a signal that there is, किस चीज का ये सिग्नल होगा, अगर वो जल्दी से जल्दी इनको, अगर वो टाल रहे हैं, अगर पुलिस टाल रही है इन क्रिमिनल्स को जो गिल्टी हैं इस क्राइम के, उनको बुक करने में अगर देरी कर रही है, तो ये किस चीज का सिग्नल होगा कि
this is a repetition of the injustice that were committed against पहलू खान and others. तो ये उसी चीज का सिंबल होगा कि उनके साथ जो इनजस्टिस हुआ था, ये और एक केस उसी में ऐड हो जा रहा है ऑफ द इनजस्टिस डन बाय द पुलिस, उस चीज का सिग्नल होगा, ठीक है, इन दीज केसेस. More so, the repeated nature of these acts call into question yes, निंदा करना, right? So put the government in docks. मतलब उनको क्रिटिसाइज कर रही है कि, और हाईलाइट क्या कर रही है कि इसकी वजह से कम्युनल डिसहार्मनी होगा, ऐसा ऑपोजिशन ने किया है. मोर सो, वेरी नाइस क्रिस्टी, गुड जॉब. More so, the repeated nature of these acts calls into question the outcome of recent jurisprudence on cattle slaughter, the 2005 judgment by the Supreme Court in particular, which banned cattle slaughter based on an expansive interpretation of directive principles of state policies beside Article 48, 48A and 51A of the Constitution. तो basically ये जो रिपीटेड एक्ट्स हैं, ये किस चीज का जूरिस्प्रूडेंस क्वेश्चन करती है. अब ऑथर बोल रहा है ये बस पुलिस और गवर्नमेंट को देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि बस यहीं तक ये मैटर खत्म हो जाता है. ये एक्ट किस चीज को दर्शा रहा है कि ये जो रीसेंट जूरिस्प्रूडेंस हुआ है, ठीक है, ऑन कैटल स्लॉटर, द 2005 जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था, इन पर्टिकुलर किस चीज के लिए, विच बैंड कैटल स्लॉटर बेस्ड ऑन एन एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन, एक बहुत बड़ा इंटरप्रिटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर में उन्होंने ये बैन किया था. तो एक मेजॉरिटी ऑफ द प्रिंसिपल है जिसके अंदर में ये छोटा सा सेक्शन है, ठीक है. दिस जजमेंट हैज ओवरटर्न्ड एन अर्लियर रूलिंग इन 1958. तो अब उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो रूलिंग था, ये जो 2005 का जो जजमेंट था, ये 1958 का जो जजमेंट हुआ था उसको ओवरटर्न किया था, उसको रिवर्ट किया था. इंटरप्रिटेशन रिजल्टेड इन स्टेट्स मोस्टली लेड बाय, सॉरी, which had limited the ban only to useful cattle engaged in agricultural husbandry. तो ये उसको क्या बदला था 1958 में, क्या था बैन, किस चीज पे लिमिटेड था, यूजफुल कैटल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री में जो जितने भी कैटल्स होते हैं उनको स्लॉटर करने के अगेंस्ट था, ठीक है. जो भी एग्रीकल्चर में जानवर आते हैं, जो भी एनिमल हस्बेंड्री में जानवर आते हैं, उनको उनको स्लॉटर करने के पे बैन था, राइट. उनको यूजफुल कंसिडर किया जाता है उन पे बैन था कि उनको नहीं स्लॉटर करना है 1958 को, जो 2005 में उसको ओवरटर्न कर दिया था जजमेंट, ठीक है. द जजमेंट्स इंटरप्रिटेशन, और इसका जो इंटरप्रिटेशन हो गया, ये जजमेंट का जो इंटरप्रिटेशन हो गया, मोस्टली लेड बाय बीजेपी. और ये जो इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, इसका जो एक्सप्लेनेशन जनरली बीजेपी ने जो किया है, टू कम अप विथ स्ट्रिंजेंट लॉज ऑन काउ स्लॉटर. तो इन्होंने क्या कर दिया, स्ट्रिंजेंट लॉ कर दिया काउ स्लॉटर के अगेंस्ट, ठीक है, कि और स्टिग्मेटाइज कर दिया किसको, बदनाम कर दिया दलित एंड मुस्लिम्स एंड ट्राइबल्स फॉर देयर डाइटरी हैबिट्स एंड डिपेंडेंस ऑन कैटल प्रोडक्ट्स फॉर अ लाइवलीहुड, बिसाइड्स अलाउइंग फॉर इम्प्यूडेंट बिहेवियर बाय सोशल सो कॉल्ड विजिलेंटीज. तो उन्होंने एक तो क्या कर दिया, स्ट्रिंजेंट लॉ बना दिया लॉ काउ स्लॉटर के ऊपर, स्टिग्मेटाइज कर दिया दलित्स, मुस्लिम्स एंड ट्राइबल कम्युनिटी को, किस चीज के लिए, क्या बोल के कि उनकी डाइटरी हैबिट्स वो बहुत ज्यादा मीट पे डिपेंड करते हैं या मीट प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, तो उनकी लाइवलीहुड पे क्वेश्चन कर दिया. और क्या कर दिया, अलाउ कर दिया ये विजिलेंटीज, जो अपने आप को विजिलेंटीज बोल रहे हैं, उनको भाई तुम जो करना है तुम करो, इनकरेज कर दिया, ठीक है, कि इसके तरफ एक्शन लो. ओके, सो इट इज नॉट इनफ टू कंडेम दीज एक्ट्स, इट इज टाइम yet again for judicial rethink on legislation over cow slaughter. तो ये इस एक्ट की निंदा करना बस काफी नहीं है, हमें और भी क्या करना चाहिए. सो अगेन द कंक्लूजन ओवर हियर इज दैट इट इज नॉट इनफ टू कंडेम दीज एक्ट्स, लेकिन अब क्या टाइम आ गया, जुडिशियल रीथिंक ऑफ लेजिस्लेशन, वापस से सोचना होगा कि कैसे इसको ये काउ स्लॉटर वाला जो लॉ है उसको कैसे रिफ्रेज किया जाए, ये रीथिंक किया जाए. So that is the passage for today. What would be the tone of the passage? अगर हम टोन देखें पैसेज का, तो कैसा है टोन, ऑथर का टोन?
anyone who can tell me contemptuous tone? Very nice. Contemptuous भी हो सकता है, definitely contemptuous हो सकता है ईशान. Good job. या critical भी कह सकते हैं. In layman's term, critical is also not bad. Okay, tone हो गया इसका contemptuous. Good job. All right. So that was the editorial for today. I will see you again for tomorrow's editorial, same time, 12 sharp, just like I like to say it. Uh, acerbic, yes. Another very nice acerbic. I I was almost ready to give my closing speech. चंदन मैं बता दूंगी टोन्स का कॉन्सेप्ट आपको देखते देखते ही समझ में आ जाएगा. कंटेम्पचुअस असर्बिक दोनों किस टाइप के टोन होते हैं? दोनों नेगेटिव कॉनोटेशन वाले टोन होते हैं. मतलब जब ऑथर किसी चीज की घोर निंदा कर रहा है या किसी चीज की तरफ स्ट्रॉन्ग हेट्रेट या डिसलाइक की फीलिंग दिखा रहा है, तो ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं. कंटेम्पचुअस हो सकता है या असर्बिक हो सकता है. लॉडिटरी आपने सीख ही लिया है. So ऐसे ऐसे करके आप सारे टोन सीख जाओगे चंदन. And if you want to learn about tones, there are classes will happen in the future on tones as well. All right, so आज के जो क्लास हैं, बाकी क्लास उसके इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी. So please make sure that you stay vigilant of the group. That is it for today. Thank you so much for attending the session and making sentences. Hope it helped. I will see you tomorrow. Auf Wiedersehen. Bye, everyone. Sayonara. Sayonara.